So whenever we're talking about the diet, जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या खाएं और क्यों खाएं, what to eat and why to eat. Okay, so let's go through the Ayurveda, and we just chanted the Lord Dhanvantri mantra, which is written here. Namami Dhanvantrim Adidevam Surashur Bandit Pad Padmam Loke Jararuk Vay Mrityunasham Dhata Remesham Vivid Aushadinam. So we just chanted Dhanvantri mantra, and the meaning of Dhanvantri mantra, that we are surrendering ourselves to the Lord Dhanvantri, whether the good person or the bad person, who all are doing the worship of Dhanvantri, because each and everyone want to get rid from the diseases. And the Lord Dhanvantri is removing all the illness from this world. Lord Dhanvantri removing all the diseases and aging. And with the method and with the medicine of Lord Dhanvantri, we can become fearless and we can win the death. So we are surrendering ourselves to the feet of Lord Dhanvantri. हम अपने आप को भगवान धन्वंतरी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और उनकी वंदना कर रहे हैं कि जिनकी देवता भी पूजा करते हैं और राक्षस भी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी को बीमारियों से मुक्त होना है. और लॉर्ड धन्वंतरी एक जो इस पूरे ब्रह्मांड के रोगों को, बुढ़ापे को, भय को, मृत्यु को दूर करने वाले ऐसे विविध औषधियों के ज्ञाता लॉर्ड धन्वंतरी को हम प्रणाम करते हैं. सो नाउ आयुर्वेदा हैज कम फ्रॉम द माउथ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. लॉर्ड ब्रह्मा इज द फर्स्ट पर्सन who told about Ayurveda. So Lord Dhanvantri has not told about the Ayurveda. Lord Brahma has told about the 4 Vedas, and as per the concept of Veda, nothing is left if someone is studying the Veda. अगर कोई 4 वेदों का अध्ययन कर ले तो कुछ दुनिया में कुछ भी जानने योग्य बचता नहीं है, सब कुछ इसमें है. And Ayurveda is the part of this. So everything is coming under this 4 Veda. हर चीज इन 4 वेद में आ जाती है. Ayurveda is the part of Atharvaveda. Even Ayurveda is included in this 4 Vedas. Everything is included in this 4 Vedas, and this has come from the mouth of Brahma. So this is the sequence. Then Brahma has passed this knowledge to his son, that is Daksha Prajapati. तो पिता ने अपने पुत्र को ज्ञान दिया. Father has given this knowledge to his son. Then this knowledge got transferred to the very famous ancient 2 doctors. They were twins and called Ashwini Kumar. फिर ये नॉलेज बहुत ही प्रसिद्ध वैद्यों के पास आई, 2 डॉक्टर के पास, जिन्हें अश्विनी कुमार के नाम से जाना जाता है. Then Lord Indra, and from the Indra then it came to the earth. फिर लॉर्ड इंद्रा के पास आई, इसके बाद ये पृथ्वी पर आई. यानी आयुर्वेद में कहा गया कि पहले नॉलेज पृथ्वी पर नहीं थी, ये स्वर्ग लोक में और दूसरे लोकों में थी. इंद्र के बाद ये पृथ्वी पर नॉलेज आई. सो बिफोर द लॉर्ड इंद्रा दिस नॉलेज वाज नॉट इवन ऑन द अर्थ as written in the Ayurveda. So before the Lord Indra, this knowledge just was in the other loka, like the Swarg Loka and other loka. After the Lord Indra, this knowledge has arrived on the earth. So these are the very great saints, great rishi of the Ayurveda, and they have spreaded this knowledge on the earth. इनके माध्यम से इस knowledge को पृथ्वी में फैलाया गया. So now there is many things, like I'm not going in the very deep detail, but would like to tell you the story of Rishi Bhagavat, because we are going to discuss Ashtanga Hridaya. So when this knowledge has come to the earth, so one transfer to the second transfer to the third. In this way, this will keep on transferring to one saint to another saint, one rishi to another rishi, one person to another person. ये knowledge धीरे धीरे transfer होती रही. Few person has developed the school of surgery, and some other person has developed the school of medicine. Okay, so there were 2
types of practice were going on. One, the practice of medicine, that we have to treat everything by medicine. One, the school of surgery, sometimes we need surgery. So even that time, there were two concept were in the practice. उस समय भी दो प्रकार के कंसेप्ट प्रैक्टिस में आए. पृथ्वी पर आने के बाद यह नॉलेज दो भागों में बट गई. कुछ लोगों ने सर्जरी पर काम किया, कुछ लोगों ने मेडिसिन पर काम किया. So now I would like to talk about this knowledge keep on going. This knowledge has came to the Lord Bhagavad Rishi. Bhagavad Rishi has felt there are too many books. Charak Samhita, Susru Samhita, Kashyap Samhita. There are too many books in the Ayurveda. Hundred books in the Ayurveda. How can one remember? How the simple person will remember this much knowledge? Because we are having very short life. Suppose we are having 100 years life. Even we don't have 100 years now. Suppose that time we are having 100 years life. But how can one remember each and everything in this short life? कि हमारी उम्र आज तो 100 साल भी नहीं बची, चलो उस समय 100 साल की होती थी. एक व्यक्ति का इतना छोटा जीवन है, इतने कम छोटे जीवन में वो इतनी सारी नॉलेज कैसे सीखेगा? तो भागवत को इस चीज से बड़ी पीड़ा हुई. भागवत बिकम वेरी सेंसिटिव फॉर दिस. देन भागवत हैज गिवन ए वेरी ब्यूटीफुल book, that is Ashtanga Hridaya. The meaning of Hridaya means heart. Means even the simple heart can absorb this knowledge. Even the simple human being can absorb this knowledge, can understand this knowledge. So Bhagavad has all the complicated things has been simplified by the Bhagavad and given in a very, very beautiful form, very simple form, in the very easy form by the Bhagavad Rishi. So nowadays, the many, even if you go in the South India, most of the practitioner following Lord Bhagavad, even in the other part of the country, the Ayurveda practitioner following the Lord Bhagavad because it's easy to understand and easy to apply. तो भागवत ऋषि ने इस नॉलेज को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति समझ सकता है. आप कभी भागवत के द्वारा लिखी गई अष्टांग हृदय को पढ़ेंगे, आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको इतना मजा आएगा. इफ यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक written by Lord Bhagavad, you will be very excited and you keep on reading because this is really wonderful books and very easy to concept and very realistic books. Each and every disease can be treated by this knowledge. हर बीमारी का इलाज इस ज्ञान के आधार पर किया जा सकता है. The Rishi Bhagavat was a very wonderful Rishi. He has just done this all work only for the purpose of humanity without any expectations, even without the expectation of name, fame, money, anything. ऋषि भागवत जी ने ना तो नाम, ना प्रसिद्धि, ना धन, किसी के लिए भी ये काम नहीं किया, बस उन्होंने मानवता के लिए काम किया. So ऋषि भागवत is really very famous personality in the field of Ayurveda. So there are many books in the Ayurveda. We can see Charak Samhita, Susru Samhita. There are many books. And this is the Ashtanga Hridaya, which is the very easy to process, easy to digest, and everything. Whether you see the Charak Samhita, Susru Samhita, all the knowledge you will find here. There are many books we can see in the Ayurveda. So even Ayurveda has been divided in 8 parts, like pediatric psychiatry and all, gynecology and all. So even Ayurveda having very vast concept. So first we would like to know about the very basic concepts of the Ayurveda, because without knowing the very basic concepts of the Ayurveda, we cannot understand it. आयुर्वेद का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले तो हमें उसे ही समझना पड़ेगा. उसके बिना हम कुछ समझ ही नहीं सकते. We can't understand anything without knowing that concept. What is that concept? तो आयुर्वेदा हमारा 3 कंसेप्ट पर आधारित है. आयुर्वेदा is having
three main concepts. So we can understand the three concepts of the Ayurveda by this. So if we know the three things in the Ayurveda, we can do and plan any treatment. So Ayurveda is based on the three main things. The three main things: number one, Vata; number two, or I can write in this way, yeah. Number two, Pitta; number three, Kapha. These are called Tridosha. Tridosha. तो आयुर्वेद तीन सिद्धांतों पर आधारित है: वात, पित्त और कफ. Right? So the question comes, whether Vata is good or bad, whether Pitta is good or bad, whether Kapha is good or bad. So answer is this: it can be both. It depends on the balanced or imbalanced condition. कि वाता अच्छा होता है कि बुरा होता है, पित्ता अच्छा या बुरा, कफा अच्छा या बुरा, दोनों हो सकता है. जब तक दोनों अच्छी साम्य अवस्था में होते हैं तब तक ठीक होते हैं. लेकिन जब दोनों में विकृति हो जाती, इन विकृति आ जाती है, तो हम कहते हैं अब गड़बड़ होगी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ. राइट? So first I would like to tell you about Vata. If you remember yesterday, I told you as per the 5-element cycle, if you know, in the 5-element cycle, we have water element, we have wood element, we have fire, earth, and metal. Or the other word we can tell it air. So Vata means wind, which is controlled by metal. That is the meaning of Vata. So Vata means combination of wood and metal or wood and air. तो वात का अर्थ है कॉम्बिनेशन किसका? वुड का और मेटल का. तो अगर हम वुड को मिला दें और एयर को मिला दें तो बनता है वाता. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट कि वुड और एयर का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड एंड एयर? बिकॉज देयर आर 3 पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. 3 लोग आपकी आंखों के सामने खड़े हुए हैं. There are 3 persons standing in front of you, right? So the person is asking you, can you tell me how can I treat myself? ये 3 पर्सन आपके सामने खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि बताइए तो मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ. इसमें एक वाता पर्सन, एक पित्ता पर्सन है, एक कफा पर्सन है. One is a vata personality, one is a pitta personality, one is a kapha personality. So vata personality means having dominant wood and air or metal. तो वाता पर्सनालिटी का मतलब है कि जिसके अंदर डोमिनेंट वुड एंड मेटल है. सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्सनालिटी? इस व्यक्ति के अंदर ऐसे क्या लक्षण होंगे, क्या रोग होंगे, बस वही पहचानना है. और वो पहचान लिया तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. हम जानते हैं कि वात का क्या ट्रीटमेंट होता है, वो भी हम समझने वाले हैं. वी कैन डू द ट्रीटमेंट वेरी इजीली वंस वी नो the personality. Oh, you are vata personality. Oh, you are wood plus air personality. Wood, what is wood? Air, what is air? Okay, before proceeding, I would like to ask you whether I am clearly audible. क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? फाइन, थैंक यू. ओके, तो आपके सामने पेशेंट आता है और अभी उसने अपना मुंह खोला नहीं, आपको समझ में आ गया भाई ये तो वुड और एयर पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है. द पेशेंट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, still the patient have not told you that what is the problem, but you, okay, this person looks like vata personality. So what are the sign of vata personality? So number one, let's see one by one. Few things, then we'll come back to the concept of Ayurveda. So let's see this. So for that, we have to go back to the 5-element cycle, and we know wood and metal.
or air? So let's see. So when we talk about the metal in the 5-element cycle, the metal means dryness. The meaning of metal means dryness. So the first characteristic of the Vata personality will be dryness. So the Vata personality will be having dryness in the skin. जो वाता पर्सनैलिटी होगा उसकी स्किन ड्राई होगी. और हमने बात कही, हमने ऐसी कोई आपको क्लियर बात नहीं कही कि स्किन ही ड्राई होगी, उसकी हर चीज ड्राई होगी. वाता पर्सनैलिटी हैविंग ड्राइनेस एवरीवेयर, ड्राई स्किन, ड्राई थ्रोट and even dry talk. What is the meaning of dry talk? Dry and rough talk. What is the meaning of dry and rough talk? The meaning of dry and rough talk, there are two types of talk. One talk, oh, you are looking very beautiful, whether you looks beautiful or not, but someone is telling, oh, today you are looking very beautiful, that is good talk, or we are just praising someone. That is not Vata talk. Vata talk means rough talk. Oh, how you are looking today, very bad. Vata personal are straightforward. They will tell what exactly is there. Okay. Suppose if I'm asking after my class, if I ask you, okay, tell me, how was my class today? Okay. मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा बताओ तो मेरी क्लास कैसी थी आज की? तो कुछ लोग बोलेंगे कि बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, है ना. और कुछ लोग बोलेंगे यार क्या अच्छी थी, साउंड आ नहीं रहा था, है ना, साउंड आ नहीं रहा था और बीच बीच में आवाज अटक रही थी, और हम जो सीखने बैठे थे वो तो सीखे नहीं, पता नहीं आपने क्या क्या सिखा दिया. So this is a straightforward talk. Maybe it's right. This is Vata talk. So Vata people are straightforward. They are rough. Even we need them also. They are rough. So this is called dryness, means dry. कहते हैं यार इसके thought में बहुत dryness. इसके the Vata personality means dryness, dry thought. So in this way, the first characteristic of the Vata is dryness. Okay, they will come to you, doctor, I'm having dryness in my skin. Okay, no problem, I will give you one lubrication, right? That is okay. So now, oh doctor, I have dryness in my knee, means arthritis. What is dryness? Dryness means when there is no leaves on the tree, that is dryness. Okay, when the lots of tree, lots of fruits, that is not dryness. Dryness means now tree, the leaves are falling, that is dryness. So aging is dryness. When we are going towards the aging, that is dryness. जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हम जब बूढ़े व्यक्ति को देखोगे उसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, that is dryness. So Vata people means dry skin, dry throat, dry skin, dry speech, dry knee, dry joints. Okay, dry joints. Or the meaning of dry speech means straightforward. They will tell everything. Oh, you're like that. Don't think that I will praise you. You're like that. Okay. अब हम कफा की बात करेंगे आगे चल के. कफा पीपल तो हमेशा मुस्कुरात दूसरों की बड़ाई करते हैं. वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल. चाहे आप सुंदर हो चाहे नहीं हो, कफा पीपल हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उनके दिल में किसी को बुरा लग जाए ये कफा पीपल को पसंद नहीं. Okay, so the Kapha people will always praise someone else, but this is not the time Kapha, because right now we are discussing about the Vata. So let's see more points about the Vata. Okay, so the first characteristic I told you about the dryness. The second characteristic of the Vata personality, because Bud means bind, Bud means lightness. Bud means lightness. Like see, if we talk about the earth is heavy, but wood is very, very light. Like we can see the kids are jumping here and there, so they are light. Okay, तो wood का मतलब होता है हल्कापन, लघुता. Okay? तो जैसे हम ड्राइनेस को बोलते हैं रुक्षता, ड्राइनेस मीन्स रुक्षता, और हल्केपन को बोलते हैं लघुता. So the second characteristic of the Vata personality, that is lightness. Lightness.
So what is the meaning of lightness? The meaning of lightness, if you look at the Vata personality, they will be thin, lean and thin. If the person is highly overweight, means maybe some other personality and maybe some combined personality. Generally, if we see the kids, they are jumping here and there, they are never stopping them, just jumping here and there. So lightness, laguta, that is the characteristic of Vata. अगर आप देखो कि एक तरफ है एलिफेंट और दूसरी तरफ कोई हल्का फुल्का प्राणी, जैसे मान लो आप कल्पना करो हिरन, okay. So hiran is Vata, elephant is Kapha. Elephant means overweight. Okay, so Vata means very very light. मानो कि दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, एक एकदम दुबला पतला लीन है और एक ओवरवेट है, तो दुबला पतला लीन है वो है Vata. The person who is very thin, lean, that is Vata personality. And the person who is overweight, that is Kapha. Okay, suppose you are having two stones, one is a very small stone, one is a bigger stone. So small stone is Vata. So this Vata means who is light. Okay, suppose you want to eat the food. Okay, so there are two types of food. One is rabdi or mawa or sweets or having too much calorie. On the other side, very light food like the mamra, like the very very light food, very very light, even you can no weight, that is Vata. So Vata food means very light food. Vata person means very light person. Okay, because the characteristic of the Vata is light, and the thing who is heavy, that is not Vata, that is Kapha. So what I want to tell you कि जब हमें बात बढ़ाना होता है तो लोगों को हम हल्का हल्का खिलाते हैं, है ना, और जब हमें तो हमें देखना होता है अगर किसी का वात बढ़ाना है कि कम करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका फूड प्लान करते हैं. फूड में जो भी बहुत हल्के फूड होते हैं वो सब बातें होते हैं. ऑल द फूड हैविंग वेरी लाइट वेट, very very lightweight, even is it light to digest, they are Vata food. So right now the second characteristic of the Vata is lightness. So if suppose someone is very heavy and want to become light, then we are increasing Vata, right? Increasing Vata. So nothing is bad. Vata, Pitta and Kapha, it is the demand, it is the need, it is the question of demand. तो ये कुछ भी बात पित्त कफ को घटाना बढ़ाना पड़ सकता है. तो हल्केपन का मतलब है, लाइटनेस का मतलब है कि शरीर का वजन हल्का. ओके, तो बाता पर्सनैलिटी वाले एकदम हल्के फुल्के होते हैं. और आप जानते हो कि हल्के फुल्के लोग थोड़ा सा एक्टिव भी होते हैं, फट से उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, चलने लग जाते हैं, कुछ भी काम के लिए वो लोग इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं. कफा पीपल को थोड़ा सोचना पड़ता है, टाइम लगता है, क्योंकि वो थोड़े हैवी होते हैं एंड दे आर नॉट that much quick. Kapha person is not that much quick. Okay, it means I'm not telling that Kapha person is not good person. As per the Ayurveda, Kapha is the best person. But right now we are talking about the Vata. So I'm telling Vata personality is very quick, ekdam light. So there's a second characteristic of the Kapha. अब किसी ने बोला मुझे यहाँ पर lightness लग रही है, चेहरे पे मुझे numbness आ रही है, lightness आ रही है, मतलब Vata बढ़ गया है. तो कहीं भी आप, अरे मुझे पैरों में हैवीनेस लग रही है, हैवीनेस लग रही है, मतलब कफा बढ़ गया. सो व्हेनेवर द वर्ड लाइट कम्स, द मीनिंग ऑफ लाइट, दैट इज वाता. एंड व्हेन द हैवीनेस कम्स, द हैवीनेस मींस दैट इज कफा. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज़ कोई when someone is asking you can you do something, so I become active, yes yes, we will give you Vata food. Okay, I am super active. Even sometimes I am overactive. Sometimes we have seen the hyperactive kids. Hyperactive kids, these are overactive kids. What to do? Okay, reduce Vata. Okay, so activeness coming because of the Vata. Just say one of my friend, I called to one of my friend. Okay, how are you? Okay, I'm fine. Okay, I told him, okay, I want to meet you. Okay, my friend lives in another city. Okay, I'm coming now. I'm coming now. This is Vata. Quick, no laziness, that is quick. Like a kids, if you see the kids, okay, let's go for
Walking, yeah, they are always ready. But when we talk about the kapha, they are little lazy. Okay, I'm talking to my kapha friend. Okay, I want to meet you. They don't want to move from their place. They're just little lazy. Okay. Even they live in your city, but they might feel laziness to meet you. So kapha personality means having little laziness, and the vata means always active like the kids. So like someone is having very laziness, then we can increase the vata. तो हमारे पास कई प्रकार के पेशेंट आते हैं जो थोड़े आलसी हैं, तो हमें उनका वात बढ़ाना पड़ता है, बैलेंस कंडीशन में वात बढ़ाना होता है. So in this way everything should be under the balance. So this was the second characteristic. We already discussed laguta or lightness. Now the one more thing I would like to tell you, the third characteristic, you know, between the wood and metal, this is the coldness, we know. So the person belong to the metal personality, they feel coldness, and the person belong to the wood personality, though they also feel coldness. So vata personality people feel too coldness, उनको बहुत ठंडी लगती है. अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को ज्यादा ठंड लगे तो समझ जाइए कि वात की वृद्धि हो रही होगी. ठंड लगे, if the person is feeling too much coldness, there are chances that you are having more vata in your body. Suppose the people who are very lean and thin, so no fat or very less fat. So fat is working like a cushion, or even there are good muscles who they also work like a cushion. So if vata personality are not having more muscle, not having more fat, so they feel too much coldness. तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को घुटनों में ठंड लगती है, यानी घुटनों में वाता बढ़ गया है, कमर में ठंड लगती है, कमर में वात बढ़ गया है. तो अगर किसी ने बोला घुटनों में दर्द है तो हम सिकाई करते हैं, गरम गरम सिकाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ठंड का उल्टा है गरम. गरम सिकाई करने से वात कम होता है, और वात का मतलब है दर्द. So the person is asking you, can you do something for my lower back pain? When the winter is there, when the coldness is there, this pain get aggravated. Okay, means vata will be aggravated with the coldness. आपको पता करना हो कि किसके अंदर वाता ज्यादा है. 4 लोगों को लिटा देना एक रूम में, पंखा एसी सब चालू कर देना. जो वाता वाला होगा वो भागने की कोशिश करेगा. समझ जाना ये वाता पर्सनालिटी है. So vata person will want to run away if there is too much coolness in the room, too much air in the room. He can't afford. Either he needs big blanket or he will run away. वाता व्यक्ति ज्यादा ठंडी सहन नहीं कर पाएगा, और मान लो आपने जबरदस्ती करवा दी तो बीमार पड़ जाएगा. Either he will not able to wear the cold, but if you did this forcefully, oh no, you have to be here. Sometimes you don't have any chance. Like suppose you are doing the journey in the train and there is too much chilled AC in the train and you can't run away from there. Sometimes vata personality people get illness after the journey. तो वात का मतलब है कि जो व्यक्ति ठंड सहन ना कर सके वो वाता पर्सनालिटी है. अगर हमें ठंड ज्यादा लगती है मतलब वात बढ़ा हुआ है. अगर हम ठंड से हमारा रोग बढ़ता है तो भी वात है. जैसे किसी ने कहा कि ठंड बढ़ती है तो मुझे कमर का दर्द बढ़ जाता है, तो वात है. हमारे एक पेशेंट कनाडा में गया, कनाडा की ठंडी में उसको कमर का दर्द चालू हो गया, भयंकर कमर का दर्द. क्या है? वात है, वात. And he called me. What can I do? Okay. Then I told, okay, do one thing. Take the carom seed, make the steam of the carom seed, and do the hot fermentation on the lower back. And she felt good relief. उसने कहा कि क्या करें. हमने कहा अब बात बढ़ गया है तो क्या करो कि अजवाइन को पानी में उबालो, उसकी भाप से कमर की सिकाई करो. आधा घंटे किया तो कमर का दर्द कम हो गया. क्योंकि ठंड का उल्टा क्या है? गर्मी. तो गरम गरम सिकाई करते हैं. इसलिए एक नॉर्मल सा है कि दर्द हो रहा है, चलो गर्म पानी में पैर रख के बैठ जाओ, गरम गरम सिकाई कर लो, है ना. क्यों गरम? क्यों? क्योंकि गर्मी से वात शांत होता है. सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाता इज कोल्डनेस, right? So it's always advisable to the vata personality kindly be away from the cold food. तो वात पर्सनैलिटी के जब पेशेंट हमारे पास आते हैं या कोई भी पेशेंट आता है जो वात का रोग लेके आता है,
तो हम उसको हमेशा अलर्ट कर दें कि ठंडी चीजों से दूर रहना है. Okay, so in this way, if we find out all the root cause, if we find out each and everything, then we can do the very perfect treatment. So let's see and go ahead. Now, the next characteristic of the Vata, that is called roughness, dryness and roughness. So roughness also the characteristic of Vata. Roughness means हम बोलेंगे खुरदरापन. कभी आपने पाया कि जब ठंड की ऋतु आती है तो आपकी स्किन रफ हो जाती है. ठंड में रफ क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने बताया कि ठंड में वात बढ़ता है और वात से स्किन रफ हो जाएगी. What is the treatment? As per the Ayurveda, apply the oil and even you can apply the cream. तो जब ठंड बढ़ती है तो खुरदरापन आ जाता है, खुरदरापन रफनेस आ जाती है. तो रफनेस भी एक वात का लक्षण है. फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि चाहे रफनेस स्किन की हो चाहे वाणी की हो, क्या इसकी ये बहुत रफ बोलता है, बहुत रफ बोलता है, इसका मतलब वाता पर्सनैलिटी है ना. सो whenever we talk about the roughness is the characteristic of vata. How to treat roughness? अगर कोई रफ बोलता है उसका भी अगर आपने वात शांत कर दिया तो रफ बोलना कम कर देगा. So the person even speaking rough, stop speaking rough if you balance the vata. So roughness is the sign of vata. And the very wonderful sign of the vata, that is called sukshma. Sukshma and chala. Sukshma, chala means mobile and sukshma means subtle. So what is subtle? What is mobile? So this is the characteristic of vata. आपको मालूम है what is subtleness? Subtleness means if you want to experience subtle thing, if you are meditating and you want to go subtle, then we are increasing the vata. This is the Vata Mudra. This is the Gyan Mudra who increase the vata. Why we are increasing the vata during the meditation? Because meditation is not the sleep. Meditation is the fully alert state of the mind. So we are going in the meditation, but we are not sleeping. So we are giving a full alert to the mind. And vata means who will make you alert. Vata will not allow you to sleep. Vata means movement, to do something. Vata will not allow you to sleep. So when we want to go in the subtle experiences, then we have to activate our vata. वात का एक लक्षण है सूक्ष्मता. जैसे हम जानते हैं कि हवा, आप दरवाजे बंद करोगे तो भी हवा अंदर आ जाएगी, है ना, लेकिन पत्थर अंदर नहीं आ पाएगा. तो हवा सूक्ष्म है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है. So the sukshma is the characteristic of vata. So if you want to meditate and you want to really experience something very good, then you should increase your vata. That's why during the meditation we are keeping head on the east, because east is the direction who increasing vata. पूर्व वो दिशा है जो हमारा वात इंक्रीज करती है. इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि पूरब की तरफ सिर करके सोना, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों में वाता बढ़ा हुआ रहे और बच्चे एक्टिव रहें, बच्चे लेजी ना रहें. There should not be laziness, inactiveness in the kids. So we always telling them, okay, sleep heading east, study facing east, because east is the direction who increase the vata. All direction increase something. We will discuss that shortly. So east is the direction who increase the vata. We want to keep active vata so that kids will be active and it is giving very subtle experience. चलो, सूक्ष्म चलो का मतलब होता है कि वाता का मन है चलना, चलते रहना, न रुकना. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि कई बार क्लास होती है, कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं और पेन होगा तो पेन को खटखटाते रहते हैं, खट 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 खट. That is vata. Vata means chal, movable. So someone is sitting like this, very stable, very highly stable, but if you look at the feet is like that. Means vata is going in the mind. Okay, so many times
B looks very stable, our mind jumping here and there. There is too much vata in the mind, and it will reflect in some body part. Okay, so you observe the body very sharply. Okay, vata, too much vata is going on here and there, means mind is jumping here and there. Okay, vata means jumping, movable, jumping, movable. So person will not able to focus, concentrate. अगर कोई व्यक्ति शांति से बैठा है लेकिन अपनी पेन खटखटा रहा है, खट 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 खट, मतलब उसका दिमाग में वात बढ़ा हुआ है, और वात ज्यादा बढ़ेगा तो व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाएगा, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा, है ना। तो वाता मीन्स चल। अब इसका एक उदाहरण हम लेते हैं कि चल का मतलब है, अब आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके ऐसे हाथ चलते हैं, सो दिस इज वाता। वाता मीन्स चल, द मीनिंग ऑफ वाता मीन्स मूवेबल, so these are the characteristic of vata, and or the bud means chal. So now let's go to the beautiful verses of the Ayurveda. अब हम एक आयुर्वेद का वर्सेस आपको दिखाना चाहेंगे कि everything is explained very beautifully in the Ayurveda. Let's see now. So on the basis of the same, so this is the verses of Ayurveda. Tatra, this is the characteristic of vata as per the Ayurveda. ये आयुर्वेद के अनुसार वाता के लक्षण है। तत्र रुक्षो, रुक्षो मीन्स ड्राइनेस, सो व्हाट द पर्सनालिटी हैविंग ड्राइनेस। लघु मीन्स लाइटनेस, सो व्हाट द पर्सनालिटी पीपल हैविंग लाइटनेस। सीता, so what the people are feeling too much cold in the body. Khara, khara means roughness, so what the people skin is rough, even there is speech is rough. Sukshma, sukshma means subtle. Chala means always movable. This is the characteristic of anila. Anila means vata. So this is very beautifully given in the Ashtanga Hridaya Ayurveda, in the chapter 2 of Ashtanga Hridaya of Ayurveda. तत्र रुक्ष लघु सीत खर सूक्ष्म चलो अनिलः की बात के लक्षण होते हैं। Now these are characteristic is, if you find these characteristic in some person, so means the person belong to the vata personality. अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर मिलते हैं तो वो वात पर्सनालिटी का है। And the same characteristic found in some vegetable, so that vegetable belong to vata personality. अगर इस तरह के लक्षण किसी सब्जी में मिलते हैं तो सो सब्जी वात पर्सनालिटी की, किसी खाने पीने के आइटम में मिलते हैं तो वो वात पर्सनालिटी का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लक्षण कहीं भी मिले वात पर्सनालिटी है। अगर आप किसी कंट्री में चले जाओ, वहां ज्यादा ठंड पड़ती है, तो हम बोलेंगे कि ये वात की कंट्री है, वाता कंट्री है, दिस इज द कंट्री ऑफ वाता, और दिस इज द वाता पर्सन, दिस इज द वाता फूड। इन दैट वे वी कैन प्लान द थिंग। सो लेट्स सी हियर नाउ। चलिए अब आपको So there are mainly 6 characteristics of the vata: dryness, lightness, coldness, roughness. Suksh means minuteness, and the movement, always movable. So the dryness means if the skin is dry, there is vata. So how to remove the dryness of the skin? Okay, do the treatment of vata. और वात का ट्रीटमेंट क्या होगा हम बताएंगे आपको। Okay, now there are 3 person number 1, 2 and 3. Who is vata? Vata is very lean and thin, so the person number 1 belong to the vata personality. वात का मतलब होता है कि बड़ा दुबला पतला व्यक्ति, उसे हम वाता कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति एकदम ओबेस है, ओवरवेट है, तो हम कहेंगे कफा। And the muscular body belong to pitta. कई लोगों के अंदर मस्कुलर बॉडी होती है, वो पित्ता। पित्ता मीन्स अग्रेसिव बॉडी, मस्कुलर बॉडी, दैट इज पित्ता। Okay, so here lightness is the sign of vata. So vata people are light or lean or thin.
Okay, so this was the few things about the Vata. Okay, so do anyone having any questions? Which food increase? Yeah. वही तो हम बताएंगे आपको। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों का वर्णन है। There are 6 rasas in the Ayurveda, है ना। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला। There are 6 types of rasas has been mentioned in the Ayurveda: sweet, sour, salty, then hot or pungent, bitter and astringent. Okay, so we will take some certain types of food to increase or decrease वाता। हम कुछ प्रकार के खाने को ले लेंगे वाता घटाने बढ़ाने के लिए, हम ले लेंगे इसी में से। हम खाने से ही बात को बैलेंस करेंगे, खाने से ही पित्त को बैलेंस करेंगे, खाने से ही कफ को बैलेंस करेंगे, राइट। सो वी विल go through with the Vata, Pitta and Kapha, all three. Then we'll discuss how to balance all three and which food, which vegetable will balance. If we know the Vata, Pitta and Kapha, then no need of any medicine. किसी ने कहा कि बात बढ़ गया, अरे देखो ना कौन सा खाना बात को घटाता है, उसका हर्बल टी बना के दे दो। किसी का वात बढ़ गया, CCFT दे दो। CCFT जानते हो? क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल सीड। क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल सीड दे दो, वात बढ़ गया तो, क्योंकि तीनों वात को शांत करते हैं। क्यूमिन मीन्स जीरा, कोरिएंडर मीन्स धनिया, फेनल सीड मीन्स सौंफ। तीनों को एक एक चम्मच पानी में उबालकर चाय का बना के दे दो, क्योंकि तीनों वात शांत करते हैं। क्यों करते हैं हम रस समझ के हम समझेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रसास टेस्ट, ओके, देन वी विल, ओके। सो इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। ओके, हम धीरे धीरे समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगली क्लास हमारी होगी परसों। वी विल टॉक our next class will be on the Saturday. Can you tell more about Vata psychology? Yeah, I will tell you Vata. Okay, so I will tell you a few more things. So listen, I told you Vata personality are the combination of wood and metal. And you know what is wood? There are two types of person sitting in front of you and you are asking them, okay, can you sing one song for me? दो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और आपने उनको बोला कि आप मेरे लिए गाना गा सकते हो। तो गाना वुड वाला कैसे गाएगा? वुड वाला चिल्लाएगा, है ना। प्लीज स्टॉप। Wood, this is the wood song. There's no rhythm, just harsh voice, only shouting, that is the wood. Okay. If the wood person is speaking on the phone, ठीक है, okay, okay. The person sitting next, because wood means louder. All things are coming. You're asking the psychology, then I'm telling you. So one person came to my clinic. As soon as he entered in my clinic, he picked one call. Someone called him and he talked in that way. Oh, this is the Vata person. Then he came to me. Then I've seen he was having all the character of the Vata and he came for the disease of Vata. He came for the treatment of Vata. तो हम वाता व्यक्ति क्या होते हैं, वो का टेम्परामेंट नहीं होता. They are not having temperament. I will tell you, okay, there are 3 persons sitting in front of you and you are telling, okay, इस सॉकेट में इस सॉकेट को फिट करो. Vata personality, because no stability of the mind. Kapha people will done.
So Vata means always want to run, run, run. Mind also want to run, run, run. That is Vata. Not stability. Okay. There are lots of things to discuss, but I think I will discuss in the next class. We'll go slowly. Okay, हम बात के ऊपर अगर आपको इतना अगर ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो हम बात के ऊपर और बात करेंगे, है ना, क्योंकि वात, पित्त और कफ बड़े मजेदार टॉपिक है ना. आप जितना चाहेंगे उतना डिस्कशन करेंगे. ओके, फाइन. सो ओके, लेट्स क्लोज द सेशन नाउ. इस पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग आप सभी को दे दी जाएगी. जो भी इनरोल पार्टिसिपेंट हैं उनको हमने ऑलरेडी ग्रुप में ऐड कर लिया है. द पार्टिसिपेंट ऑलरेडी इनरोल्ड, वी हैव ऑलरेडी एडेड देम इन द ग्रुप. इफ समवन लेफ्ट, if someone enrolled but left to add in the group, tell me. If someone don't know how to see the recording, message me. अगर कोई किसी को नहीं पता कि रिकॉर्डिंग कैसे देखना है, आप मुझे मैसेज करिए. राइट. सो क्लोजिंग द सेशन नाउ. See you on Saturday. Thank you so much. Closing the class.